नमस्कार। आज हम बात करेंगे अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स बाइंड टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एंड प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग्स। दे may block alpha or beta receptors or both. Alpha 1 blocking agents. Alpha receptor antagonists block the adrenergic response mediated through alpha adrenergic receptors. Some of them have selectivity for alpha 1 or alpha 2 receptors. Actions. The important effect of alpha receptor stimulation are alpha 1 mediated vasoconstriction and alpha 2 receptor mediated inhibition of noradrenaline release. Result of alpha blockage by alpha antagonist. Number 1. Alpha 1. Alpha 1 receptor blockage inhibits vasoconstriction, leading to vasodilation and thereby decreases BP. This fall in BP is opposed by baroreceptor reflex, which tend to increase heart rate and cardiac output. Alpha 2 receptor blockage enhances the release of noradrenaline, which stimulates beta receptors. Beta 1 stimulation in the heart results in tachycardia and increased cardiac output. Thus, the predominant effect of non-selective alpha blockage is hypotension with tachycardia. अल्फा ब्लॉकर्स, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन सेलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉक नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स में जब अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो क्या क्या होता है? वैसोडाइलेटेशन, डिक्रीज इन बीपी, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज बीपी। नॉन सेलेक्टिव में जब अल्फा 2 का ब्लॉक होता है तब क्या होता है? नो इनहिबिशन ऑफ नॉर एड्रेनल रिलीज और हार्ट रेट इंक्रीज होता है। अब अल्फा सेलेक्टिव में अल्फा 1 ब्लॉकेज से वैसोडाइलेटेशन होता है और अल्फा 2 नॉट ब्लॉक्ड। इससे क्या होता है? नो इनहिबिशन ऑफ नॉर एड्रेनल रिलीज, no tachycardia, BP decreases. Selective alpha 1 blockage results in hypotension without significant tachycardia. This is because alpha 2 receptors are not blocked, which means there is no increase in noradrenaline release. Selective alpha 2 blockage increase noradrenaline release, resulting in hypertension. Alpha blockage also results in meiosis and nasal stuffiness. Alpha blockage in the bladder and prostate leads to decreased resistance to the flow of urine. Adverse effect of alpha blockage: postural hypertension, palpitation, nasal stuffiness, meiosis, impaired ejaculation, and impotence. Classification of alpha blockers. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन सेलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में ब्लॉक अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इसमें भी दो पार्ट किए गए हुए हैं, कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स एंड नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स। नॉन कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में आते हैं फेनॉक्सीबेंजामिन और कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में आते हैं एर्गट एल्गुलाइड्स, एर्गोटामिन, टोलाजोलिन, पेंटोलामाइन और क्लोरप्रोमाजिन। सिलेक्टिव में अल्फा 1 ब्लॉकर प्राजोसिन, टेराजोसिन, ट्रिमाजोसिन, डॉक्साजोसिन और टैमसोलोसिन, अल्फ्यूजोसिन और इंडोरामाइन। अल्फा 2 ब्लॉकर्स हैं योहम्बिन और इडाजोक्सिन। अब हम बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स में फेनॉक्सीबेंजामिन की। इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल ब्लॉकर ऑफ अल्फा रिसेप्टर. Binding with alpha receptor is covalent. Hence, blockage is irreversible, non-equilibrium type. Administered both IV intravenously and orally. On IV administration, BP gradually falls over 1 to 2 hours and is associated with tachycardia and increased cardiac output. Use:
It is used in the treatment of pheochromocytoma. नेक्स्ट है कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में हम बात करेंगे एर्गट एल्कलॉइड की, एर्गोटामीन. दे हैव ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. इट causes direct stimulation of smooth muscles. It is also associated with contraction of uterus. It increases BP due to vasoconstriction. On long-term use, gangrene of toe and fingers can be due to vasoconstriction. Next है phentolamine and tolazocine. These are imidazoline derivatives. They are non-selective and reversible blockers of both alpha-1 and alpha-2 receptors. They also blocks 5-hydroxytryptamine receptors. They stimulate GI motility and increases gastric secretion. Therefore, there is vomiting and diarrhea. Used IV for hypertensive crisis during pheochromocytoma surgery due to its rapid onset and short duration. नेक्स्ट है सिलेक्टिव अल्फा-1 ब्लॉकर्स. इसमें कौन सा आता है? प्राजोसिन. इट इज़ अ पोटेंट एंड हाईली सिलेक्टिव. इट हैज़ 1000 times greater affinity for alpha-1 receptor. It dilates arterioles, hence decreases peripheral resistance. It also dilates venules, hence decreases cardiac output. There is no significant tachycardia as alpha-2 receptors are not blocked and hence no increase in noradrenaline release. It may decrease central sympathetic outflow. It inhibits phosphodiesterase enzyme, therefore increases cyclic AMP, hence decreases BP. It also decreases low density lipoprotein LDL, triglycerides and increases high density lipoprotein HDL. It relaxes urinary bladder, neck and prostate capsule. Hence it is useful in benign prostate hypertrophy. Adverse drug reactions. First dose response 1 hour after the initial dose. इससे क्या होता है? Marked postural hypotension occurs. Hence, fainting can occur. So, start with low dose 0.5 mg at bedtime and then increase gradually. और एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? हेडेक, डिजीनेस. कंजेनर्स ऑफ प्राजोसिन. ये क्या है? कौन कौन से हैं? टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, एल्फ्यूजोसिन, टैमसोलोसिन, etc. They are long acting, hence administered as once daily dose. They are highly alpha-1 selective. They have lesser incidence of postural hypotension. Alpha-1A are predominant in urinary bladder. Alpha-1B are predominant in blood vessels. Alfuzosin, tamsulosin, and irapidil are alpha-1A selective, hence uroselective, therefore preferred in benign prostate hypertrophy. Terazosin and dexamethasone are alpha-1B selective, hence used in hypertensives. Selective alpha-2 blockers. इसमें कौन सा आता है? योहेम्बिन. It is a selective alpha-2 blocker. It increases BP and heart rate since it increases noradrenaline release. It causes congestion of genitals. Hence, it is beneficial in psychogenic impotence. Uses of alpha blockers. Number 1. Hypertension. Prazosin, terazosin and doxorubicin are used to treat mild to moderate essential hypertension. Phentolamine and phenoxybenzamine can be used in hypertensive crisis due to pheochromocytoma surgery, clonidine withdrawal and chase reactions. इसमें इनका यूज़ कर सकते हैं. नंबर 2 पे यूज इन pheochromocytoma. It is an adrenal medullary tumor. It secretes large amount of catecholamine, especially adrenaline, hence increases in BP,
साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स क्या हैं इसके? सडन सीवियर राइज इन बीपी, सीवियर हेडेक, palpitation, इंक्रीज स्वेटिंग। ट्रीटमेंट है the tumor has to be removed surgically. Phentolamine and phenoxybenzamine are used for the pre-operative management of the patient and during the surgery. Inoperable cases are put on long-term treatment with phenoxybenzamine. इसका थर्ड यूज है पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज लाइक रेनाल्ड्स फेनोमेनन may be benefited by alpha blockers which afford symptomatic relief. Number 4 है congestive cardiac failure. Because of its vasodilator action, prazosin is useful in congestive cardiac failure, but ACE inhibitors are preferred. Next use है इसका in benign prostate hypertrophy, BPH. BPH is common in men. Enlargement of prostate gland result in lower urinary tract symptoms like incomplete voiding, hesitance, straining to pass urine, often associated with nocturia, urgency, and occasional incontinence. Blockage of alpha-1 receptors in bladder, prostate, and urethra decreases the tone of smooth muscles and thereby reduce the resistance of urine outflow. Prazosin, terazosin, doxazosin, and tamsulosin and alfuzosin are useful in patients who cannot be operated. Of these, tamsulosin is preferred because of its selective activity on alpha-1A receptors. नेक्स्ट यूज है इसका इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेंटोलामिन with papaverine injected directly to the corpora cavernosa is used as an alternative to sildenafil in erectile dysfunction. Thank you.